Well, after the centre overturned the Supreme Court order and gave powers to the Lieutenant Governor, the Delhi government has hit out, calling Prime Minister Narendra Modi a dictator. AAP says he doesn't believe in democracy, Supreme Court or the Constitution. इतना क्यों भय सताता है आपको अरविंद केजरीवाल से कि आप एक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं चलने दे रहे? ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है, किस तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दी है, किस तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला बदला है और किस तरह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। ये पूरा देश, पूरी दिल्ली देख रही है। Amit Bharadwaj has more details on that big story that we've been tracking. Amit, in every which way with this move, it's been ensured that the wings of the Aam Aadmi Party government has been clipped, and that's the reason why the party is now crying foul. But how is this move, this ordinance really being explained? Well, Sneha, the Supreme Court 5-judge bench, constitutional bench judgment had given absolute right of control of the services department to the Delhi government, and that came 8 years after they came into power. And it was a big saga because policy making had become quite easy for the Aam Aadmi Party government with the services department under them. Now, what happened last night with the ordinance coming into effect is the Category 1 employee, that is the top bureaucracy of the Delhi government, including the IAS cadre, the Augment cadre, and the Danics. All these officers have been now, in a way, gone back into the control of the centre because the central government has now put in place NCCSA, authority which will be taking care on the of the transfer and postings of the Category A employees, wherein you have 3 members, including the Chief Minister as the chairperson and 2 senior bureaucrats of the Delhi government. And what happens here is that in case of any difference of opinion or the LG has gotten the power to overturn the decision, and also the LG can send back the recommendations for reconsideration, which means the LG is now going to have again the final call on the transfer and postings, which eventually means the centre has gotten that right. But the lower bureaucracy, service department powers are still with the Delhi government, and that is why now you are seeing reactions of this sort coming from the Aam Aadmi Party leaders and the government right now. All right. I'm going to thank you for the moment, Amit, getting us all of those details as far as the new ordinance reducing the power of the Delhi government is concerned. The centre is bringing this ordinance on services days after the court verdict on the executive power of the Delhi government. Days after the Delhi government was given executive powers in service matters, including transfer and posting of officers, in an important verdict by the Apex Court. The centre established the National Capital Service Authority through an ordinance. It sets up a permanent authority headed by the Chief Minister, along with the Delhi Chief Secretary and Principal Secretary Home, to make recommendations to the Governor regarding matters concerning transfers, postings, vigilance and other incidental matters. BJP netas have hailed the move. The AAP called the ordinance a contempt of the Supreme Court's verdict. केंद्र सरकार जो ये अध्यादेश लेकर आई है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले की साफ अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का सम्मान है। लेकिन आज जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, वो उस हार के डर से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पावर देने के डर से वो ये अध्यादेश लेकर आई है। जिन लोगों ने 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को चुन के मुख्यमंत्री बनाया, आज केंद्र सरकार कह रही है कि उस मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं होंगे। एलजी जो चुने नहीं गए, दिल्ली पे थोपे गए हैं, उनको सारे के सारे अधिकार होंगे, और न सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार होंगे, उनके जरिए दिल्ली के हर काम के ऊपर अधिकार देने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है,
सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। दिल्ली की स्थानीय सरकार अरविंद केजरीवाल ने प्रशासकीय गरिमा को जो क्षति पहुंचाई है और जिस तरह का आचरण किया है, उससे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की छवि पर असर पड़ता है। इसलिए जरूरी था कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो, और जिस तरह का आंदोलनजीवी व्यवहार ये लोग कर रहे थे वो गरिमा के अनुरूप नहीं था। इसलिए भारत की छवि के लिए, दिल्ली की छवि के लिए इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। Let me point it out pinpointedly. It is a laughable ordinance. It is obviously done by people in blissful ignorance of the law. First and foremost, it shows that you are a bad, poor, graceless loser in a constitutional bench unanimous judgment. Second, it shows that you have been taught to dilute or modify constitutional principles by a mere ordinance. How can that be?